Audio check 1 2 3 4. Audio check. Audio check. Hello and welcome. You're watching on Money9 this live update at markets at open, and we have seen that both the benchmark indices, the Nifty and the Sensex, have opened with a mild positive in today's trading session. You can actually see the Nifty 50 trading at 15,238 at the moment, with gains of about 30 points in the opening trade, with a 0.2% uptick that we can see. Now, the breadth of the markets is actually favoring the advances at the moment. 29 gainers to 29 declines at the moment right now. When we talk about the mid-cap and the small-cap indices, they are also supporting the markets at the moment. 0.5% of an uptick for the mid-cap index, and the small-cap index is actually outperforming with 1% gains, with a gain of about 75 points out there. Now, which are the top gainers of the Nifty right in the opening session? You can see counters like GAIL and ONGC, really the top gainers at the moment, over 4.5% of an uptick for the GAIL counter over here. The State Bank of India counter is now inching closer to most of the targets that were given in our opening show, in our trade setup show, which actually talked about targets with 425 rupees. Most of the experts were betting big on this stock for today's trading session itself. IndusInd Bank and NTPC, these are the other counters that are rising in trade today. ICICI Bank, UPL, Bajaj Finance, Kotak Mahindra Bank and Divi's Labs. These are the top losers right in the opening session. So the selling pressure is actually coming in from the banking space and the financial space as well. Let's move on to see. Now look at the volatility index that has slipped. So we are not seeing too much volatility right in the opening session today. But as far as the sectoral movers are concerned, the pressure is being built up in the top three. With Nifty Bank, auto and the financial space really losing in trade right in the opening session as well. Also, when you see, sectors like FMCG, IT is actually performing today. You can actually see 1.21% of an uptick for the IT, index right now. All the stocks are in the green right now with no declines as far as the Nifty IT index is concerned. Moving on to another performer, and that's the PSU banking index. Remember, in yesterday's trading session, the PSU banking index was the top gaining sectoral index that had risen about 6% and even maintained those gains towards the close of the session as well. Stemmed some of the losses of the benchmarks, and they have extended their gains today, and you can see all 12 stocks of the PSU banking index up in the green right at the moment. 76-point gain for the PSU banking index. Realty index को भी देखें तो कुछ रुझान यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहे हैं. 7 stocks in the realty space are trading in the green at the moment as well. Participation coming in from the metal space as well. 14 स्टॉक्स मेटल स्पेस के हरे निशान में इस वक्त काम कर रहे हैं. केवल एक डिक्लाइनिंग स्टॉक है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव आ रहा है. मीडिया स्टॉक्स में लगातार तेजी कल भी बनी हुई थी, आज भी बनी हुई है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो फार्मा इंडेक्स है यहाँ पर आज थोड़ा और वीकनेस देखने को मिल रही है. अगर आप देखेंगे तो जो ब्रेथ है वो डिक्लाइंस की तरफ फेवर कर रही है एज फार एज द निफ्टी फार्मा इज कंसर्न. एक बार देख लेते हैं कि इस समय ट्रेड और किस तरीके का मिल रहा है बीएसई पर भी. और अगर आप देखेंगे बीएसई के काउंटर पर भी अगर
सेंसेक्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी हरे निशान में ही कामकाज हो रहा था। शुरुआती ट्रेड में भी हमने पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ ही कामकाज होते हुए देखा, लेकिन इंडिकेशंस अब ये देखने होंगे कि आगे जाते हुए आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में दोनों ही बेंचमार्क इंडिसेस में इसी तरीके का रुझान टुवर्ड्स द क्लोज रहता है या नहीं। हालांकि क्यूज हमें मिक्स्ड मिले एशियन मार्केट से। शुरुआत पॉजिटिव हुई है, लेकिन आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है और उस वजह से थोड़ा बहुत वॉलेटाइल जो सेशन है वो एक्सपेक्टेड रहता है सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में। देखना ये होगा कि आज कंसोलिडेशन वापस से कंटिन्यूड रहता है पिछले 2 सेशंस के बाद, या फिर दोबारा से एक लेग अप मार्केट्स में देखने को मिलता है या नहीं। तो लगातार आपको मार्केट्स के अपडेट हम देते रहेंगे मनी 9 पर भी। हमारे नेक्स्ट शो फर्स्ट टिक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको टेक्निकल एक्सपर्ट से भी जुड़वाते हैं और बताते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ मनी 9 पर।